The Finance Bill 2022 to be discussed together. Srimati Nirmala Sitharaman to move motions for consideration of the following bills. A. The Appropriation Bill 2022. B. The Finance Bill 2022. Please move. Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 22-23 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. And you have to speak, please. Yes, sir. With your permission, sir, I rise again to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 22-23 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. The motions for consideration of the Appropriation Bill 2022 and the Finance Bill 2022 are now open for discussion. माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी. माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद. बजट का एक बहुत अहम पहलू अगर कोई है तो वो है फाइनेंस बिल. मैं आपके ज़रिए कुछ हकीकतें इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ. ये फाइनेंस बिल के ज़रिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, इनकी जो बातें सरकार लेके आई है उसको मैंने ध्यान से देखा है. अगर कहना है तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी क्या है. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है या कुछ भी नहीं है, उसके बीच में सेतु बनने का काम ये सरकार का काम होना चाहिए. और ये काम अगर कहीं से हो सकता है तो वो बजट से हो सकता है, फाइनेंस बिल से हो सकता है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये फाइनेंस बिल में टैक्स स्ट्रक्चर वित्त मंत्री जी लेके आई है उसमें तो ये और गहरा बनाएंगे दोनों के बीच का गैप. इसे फायदा नहीं होगा. कोरोना की महामारी आई, बहुत लोगों ने इसको झेला, जान गई कहीं ना कहीं परिवारों के लोगों की, और हर गृहिणी का बजट बिगड़ा हुआ है. आप देश का बजट देखते हैं पर उस घर का भी बजट देखिए. उस हर घर के बजट में दिक्कतें आई हैं. मैं देख रहा था कि सरकार की कोविड-19 मेडिकल ट्रीटमेंट में टैक्स का फायदा देने की प्रपोजल आप लेके आए हैं. स्वागत करता हूं उसका. मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, अच्छी बात है, स्वागत करता हूं. लेकिन नेकी और वो भी पूछ पूछ के कितना फायदा मिलेगा इससे? इससे तो बेहतर होता. माननीय उपसभापति महोदय, मैं बड़ा खुश हुआ था जिस दिन इस सरकार ने कोरोना को एक आपदा मानते हुए एक सर्कुलर निकाला कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु होगी उसे 4 लाख रुपया दिया जाएगा. आई वॉज हैप्पी. मैंने सोचा मैं सदन में बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी और सरकार को, वित्त मंत्री जी को. पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही घंटों में वो सर्कुलर विड्रॉ हो गया. और कोरोना में जिन्होंने जान गंवाई है, जिस परिवार ने बहुत ऐसे नर्क जैसा वक्त गुजारा है, बहुत सारा खर्चा किया है, उसे आपने पैसे देने से इनकार कर दिया. आप और इस वक्त पे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ टैक्स बेनिफिट को उसके साथ नहीं गिन सकते. और कितने लोगों की माननीय उपसभापति महोदय जाने गई है. गुजरात सरकार ने तो कह दिया था कि सिर्फ 10,000 ही मृत्यु हुई है कोरोना से. सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपकी इंसानियत कहां गई है, आप थोड़ा ठीक कीजिए, और जब एक प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप डिटेल मांगिए, सरकार को वेरीफाई करने के बाद यह स्वीकार करना पड़ा
कि गुजरात में 1.5 लाख लोग कोरोना की वजह से मृत्यु हुए हैं। 1.5 लाख लोग। आप इसको जरा गौर से देखिए। आप एक हाथ से थोड़ा देते हो, दूसरे हाथ से ज्यादा छीन लेते हो। आपके फाइनेंस बिल में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलीगल एक्सपेंडिचर अंडर आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 37 आपके फाइनेंस बिल में आप इसको सुधार करके ला रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है, कुछ चीजें मैं मानता हूं कि आप करो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर आप अगर कहीं पे एक कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं पे कोई कन्वेंशन डॉक्टर्स का होगा, आज तक जिसको फायदा मिलता था इसको आपने ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कॉन्फ्रेंसेस आप गिफ्ट को निकाल देना चाहते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुफ्त पे डॉक्टर्स को कोई कंपनी कुछ ज्यादा माल दे रही है, आप इसको बिजनेस के उस फायदे में से निकाल रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर इफ वी पुट आवर हेड्स टुगेदर, उसमें से कुछ अच्छा ही निकलती है। अगर डॉक्टर्स कहीं कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, साथ बैठेंगे, अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, तो इससे फायदा तो मेडिकल साइंस को मिलना ही मिलना है। तो आप इसको पुनः विचार कीजिए। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कॉन्फ्रेंसेस जो है उसको आप इसमें से हटा दीजिए और उसका बेनिफिट आप शुरू रखिए। मैं आपके जरिए गुजारिश करना चाहता हूं। नो चेंज इन बेसिक टैक्स। आप याद कीजिएगा जिन दिनों में आप इधर बैठते थे, आज जो सरकार में बैठे हैं, वो मैं देख रहा था उस वक्त के उन नेताओं के भाषण, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, और वो कहते थे कि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइस बढ़ती बढ़ती है, कुछ होता है, और इसीलिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स का स्लैब हर साल बढ़ना चाहिए। कम से कम जो पार्टी इन पावर है उसके मैनिफेस्टो को देख ले, उसके मैनिफेस्टो में भी कहते थे। आज आपके मैनिफेस्टो से आप बिछड़ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो को जरा देख लीजिए। उधर आपने ही कहा था, तो क्या दिक्कत होगी? और वो कौन क्लास है? वो क्लास है जिसने कोरोना में सबसे ज्यादा सहन किया है। वो सर्विस करने वाले वो लोग हैं जो अपनी इनकम छिपा नहीं सकते हैं। सैलरी आती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वहीं पे उसका पैसा काटा जाता है। उन लोगों को, उन मिडिल क्लास के लोगों को आपने फायदा देने का नहीं सोचा है। इस बात का मुझे बहुत ही दर्द है। डेफिनेशन ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज इस फाइनेंशियल बिल में, इसको आपने टैक्स की डेफिनेशन में सरचार्ज भी ले लिया है और शेष भी ले लिया है। और ये टैक्स इंक्लूड्स एनी सरचार्ज, एनी शेष। ये एक डेफिनेशन बदलने से एक बहुत बड़ा असर उन केसेस पे भी होना है जिनके अपील्स आज पेंडिंग है। और आपने जो फाइनेंस बिल में जो आप अमेंडमेंट लेके आए हो, दिस अमेंडमेंट हैज ए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2005-2006। इससे क्या होगा? एक तो मैं तो बेसिकली उससे अगेंस्ट हूं कि टैक्स स्ट्रक्चर कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाना चाहिए। आज मुझे कुछ है, मैं कर रहा हूं, मेरे सामने टैक्स क्या है मुझे पता है। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ चीज लेके आते हो, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये आप टैक्स की डेफिनेशन में दो चीजें जो लाए हो, उससे पेंडिंग केसों पे भी असर होगा। और इसलिए मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको जरा फिर से सोचें। जो वित्त मंत्री जी बार बार एक चीज कहती है कि देखो, दुनिया के 32 देशों ने कोरोना काल में टैक्स बढ़ाया। अब शुक्र मानो मेरा
कि मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया। ये बार बार कहा जाता है। मैं आपके जरिए उपसभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि उन 32 देशों ने कोरोना के काल में उनके नागरिकों को कितनी मदद की थी, वो कभी आपने देखा है? मैंने कुछ लोगों से बात की है। आप जिस 32 देशों की बात करते हो ने, उन देश के लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन था, अगर मेरा मोटेल बंद था तो मुझे ऐसा पैसा सरकार ने दिया कि मुझे एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, मेरा धंधा बंद है। मैं जो कमाता था उतना पैसा सरकार ने मुझे दिया है। कोई अगर काम करने वाला भी कहीं दिक्कत में था, उसको पूरी मदद उन देशों ने की। और टैक्स लिया तो किससे लिया? हम तो उल्टा करते हैं। हम लेते हैं उन दिक्कतमंद वाले लोगों से और देते हैं चंद बड़े पूंजीपतियों को, जिनको शेल्टर देने की आपको जरूरत नहीं है। वो स्वयं में काफी तगड़े लोग हैं, उनके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल पे फिनांस बिल में ये जब प्रोविजन लेके आए हैं, मैं आपके जरिए पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है जो भारत सरकार का है, उनके आंकड़ों के आधार पे बात करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो कहेंगे कि ऑपोजिशन वाले तो हवा में बातें करते हैं। मैं ये सरकार के ही डॉक्यूमेंट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उन्होंने जो फिगर्स वेबसाइट पे उनकी लगाया है, उन्हीं के आधार पर कहता हूं कि पेट्रोलियम सेक्टर में सेंट्रल एक्सचेंजर को कितना आपका कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम सेक्टर की ओर से आया। हमारी भी सरकार थी 2014-15 में 1,72,065 करोड़ वो एक्साइज से आते थे। मैं समझ सकता हूं, थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ती है, थोड़ा बहुत बढ़ सके समझ सकता हूं, पर आप तो क्या करते हो? थोड़ा नहीं, 2014-15 में 1,72,065 crores rupees थे। You have increased it, and 2020-2021 में 4,55,069 crores आपने एक्साइज के नाम पे पेट्रोल और डीजल से आपने लिया है। और अगर आप देखें 2021-22 और 2021-22 ये दोनों का आधा सेक्टर में भी, एक में आपने 2,16,000 करोड़ एंड ऑड ले लिए हैं और दूसरे हाफ में आपने 2 लाख करोड़ और लेने का आपका अंदाजा है। मैं उपसभापति महोदय आपके जरिए कहना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल मई 2014 में जब हमारी सरकार थी यूपीए की, पेट्रोल के ऊपर एक्साइज थी ₹9.20, 9 रुपया 20 पैसा पेट्रोल के ऊपर एक्साइज थी। डीजल के ऊपर सिर्फ 3 रुपया 3 रुपया 46 पैसा ही डीजल के ऊपर थी। आप जब आज के प्रधानमंत्री जी ही जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, वो बार बार हाउस में सुनाते थे कि क्या कर रहे हो, ये भारत सरकार लूट मचा के बैठी है। जब यहां से भारत सरकार ने कहा कि स्टेट थोड़ा वैट कम करे, हमारे कुछ राज्यों ने करा, तब कहा कि तुम्हारे भारत सरकार का पाप का पोटला राज्य सरकारों पे मत फोड़ो। ये प्रधानमंत्री जी आज के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि स्टेट गवर्नमेंट वैट नहीं कम करेगी क्योंकि स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है, एक्साइज कम करो क्योंकि ज्यादा तुम लेते हो, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया? जो पेट्रोल पे 9 रुपया 20 पैसा था ना, वो आपने 18 रुपया 70 पैसा पेट्रोल पे बढ़ाया। आपने
डीजल के ऊपर 18 रुपया 34 पैसा बढ़ाया। सो इंक्रीज ऑन डीजल इज 531%। 531% इंक्रीज आपकी एक्साइज ड्यूटी। और ये फिगर्स पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के है, कि कोई मेरे घर के आंकड़े नहीं है। तो इतना ज्यादा आपने एक्साइज बढ़ाया। हम थे पावर में, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ये आधार रखता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमें निर्भर रहना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट से हम ज्यादा लेना पड़ता है, बाहर से हमारे देश में नहीं है। कच्चा क्रूड हमारा जो एवरेज था लास्ट 3 इयर्स between 2011 to 2014, our average was per barrel $60.6 per barrel। ये कांग्रेस के शासन, आपके 3 साल के शासन में 2011 to 14 आपका एवरेज $60 6 सेंट पर बैरल, आपका 11 से 14 में कह रहा हूं। और हमारा जब यूपीए गवर्नमेंट थी, हमारा एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में जो रहा वो कहीं ज्यादा रहा। $100 US डॉलर से कभी नीचे नहीं गया। पर हमने कभी भी पेट्रोल और डीजल को 100 का आंकड़ा छूने नहीं दिया। ये हकीकत है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा, हमारे वक्त में भी 108 US डॉलर पर बैरल जिस दिन हुआ था कच्चा क्रूड, उस दिन क्या प्राइस थी? यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल वाज एट 108 US डॉलर पर बैरल, बट पेट्रोल एंड डीजल वाज ₹71.41 पैसा and 55 rupees and 49 paisa per liter respectively, which have been now increased to 98.61 and 89.87, जब 108 US डॉलर पर बैरल, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया। कुछ तो सोशल मीडिया में मैं एक शायरी तो भूल गया, पर कहाँ गई वो नारी जो होती थी गैस के बोतल पे सवार, वो करके एक पूरी शायरी किसी ने बनाई हुई है। आज तो मंत्री है वो, और आज जो पेट्रोल और आज जो गैस का दाम बढ़ा है, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस एलपीजी है उसकी प्राइस बढ़ी नहीं, उसकी प्राइस कम हुई है। 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी की जो प्राइस थी हमारे शासन में बिटवीन 2012-2013 ये प्राइस थी, और आपके शासन में वो कम होके, इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी महंगा नहीं हुआ है, सस्ता हुआ है, और वो कम होके 769.11 सेंट US डॉलर पर मैट्रिक टन, ये आपका एलपीजी का दाम कम हुआ है। और आपने किया क्या? जो 410 रुपये का गैस का सिलेंडर था इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद, उसको आपने 1000 रुपये तक पहुंचाने का काम वो आपके शासन में हुआ है। ये हकीकत है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, ये हम बार बार कहते हैं कि हमें इस देश में पॉल्यूशन को कम करना है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करें, और इसको लेके हम बारी बारी क्या स्टेप लेते हैं, लेंगे, उसकी बातें करते हैं। और असलियत क्या है? कि असलियत यह है कि आपने सोलार एनर्जी की जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी उसको आपने कम नहीं की, आपने उसको बढ़ाने का काम किया है। इससे किसका फायदा होगा? क्या इससे आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करोगे? क्या इससे आप इस देश के अंदर
पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर पाओगे? मेरी वित्त मंत्री जी को आपके जरिए गुजारिश है कि आपके इस फाइनेंस बिल में सोलर सेल्स पे जो 20% करंट कस्टम ड्यूटी थी, योर प्रपोजल इन दिस बिल इज टू इंक्रीज इट 25%. आपका सोलर मॉड्यूल्स, इसके ऊपर एट प्रेजेंट द कस्टम ड्यूटी इज 20%. वित्त मंत्री जी के इस फाइनेंस बिल में प्रपोजल है इसको इंक्रीज करके 40% करने की. अब किस दिशा में हम जा रहे हैं? आप कहोगे कि हमको तो मेक इन इंडिया बढ़ाना है इसलिए हम इसको ज्यादा महंगा कर देंगे. जवाब आएगा एक्सपेक्टेड. पर अगर आपको इस एनवायरनमेंट के लिए चाहिए तो क्वालिटी और लेटेस्ट थिंग्स के साथ कंपटीशन भी मेक इन इंडिया कर सकता है, वो ख्याल में रखते हुए हमें ये करना होगा. ये एक और प्रपोजल इस फाइनेंस बिल में रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्जेस की लेके आए हैं. मैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ इनकम टैक्स को लेके आप एक फाइनेंस बिल में एक चीज लेके आए हैं. मेरा एक बेसिक बात आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता. पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है. ये सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है. और पब्लिक सेक्टर आप आज खत्म करने क्यों जा रहे हो? इस देश में अगर बीएसएनएल भारत सरकार का नहीं होता तो वो एक छोटे से गांव में टेलीफोन कोई आपका बड़ा उद्योगपति दोस्त कभी वहां नहीं पहुंचाता. वो भारत सरकार का पीएसयू था कि बीएसएनएल एक छोटे गांव में भी टेलीफोन लेके गया. रेलवे भारत सरकार का पीएसयू है तो एक छोटे गांव के लोगों के लिए भी सुविधा रेलवे देगा. कल आप किसी चहीते उद्योगपति को ये दे दोगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वो अपना मुनाफा देखेगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, वो सर्विस ओरिएंटेड कभी भी नहीं होगा. आज हम बीएसएनएल की क्या हालत कर रहे हैं, आज हम एमटीएनएल की क्या हालत कर रहे हैं. अगर ये आपका मर जाएगा तो 3 या 4 बड़ी कंपनी जो टेलीफोन ऑपरेट करती है वो ट्रीटी कर लेंगे, साथ मिल जाएंगे और 100 रुपया प्रति मिनट भी करना होगा, वो करके देश में लूट मचाएगा. ये तो आपका पीएसयू है तो आप कंट्रोल में रख सकते हो. आप उस पीएसयू को क्या हालत कर रहे हो? आप बीएसएनएल को कहते हो कि तुम्हें कोई भी चीज बाहर से नहीं लेने देंगे, मेक इन इंडिया यूज करो. और अपने दोस्तों के टेलीफोन ऑपरेटर से उसको कहते हैं कि आप चाइना से लाओ, कोरिया से लाओ, कहीं से भी लाओ, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है. हाउ बीएसएनएल विल कॉम्पीट विद दिस पीपल? आप बीएसएनएल को कहते हो कि आप 4G और 5G में आप कॉम्पीट नहीं करोगे, आप दूसरों के साथ हरीफाई नहीं करोगे, क्योंकि वहां दोस्त लोग हैं वही कंपटीशन करेंगे. फिर बीएसएनएल जिंदा क्या रहे? तो ये आप जियो को जीने दो पर बीएसएनएल को मत मरने दो. मेरा तो यही कहना है. मैं इसी लफ्जों के साथ मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, उसको वित्त मंत्री जी इसके ऊपर गौर करेंगे. ये लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं. धन्यवाद. माननीय गोयल जी. माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी. माननीय उपसभापति महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन 2022-23 और फाइनेंस बिल 2022-23 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ. उपसभापति महोदय, ठीक आज से 2 वर्ष पूर्व 24 मार्च 2020 को इस देश में लॉकडाउन लागू किया गया था और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको इन्वोक किया गया था. अब पिछले 2 साल में एक लंबे समय तक देश को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा. देश के मजदूर, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनको ट्रेनों में बैठकर अपने अपने गांव लौटना पड़ा. एक संकट के दौर से पूरे देश को गुजरना पड़ा. तरह तरह की बंदिशें लगाई गई, लेकिन उपसभापति महोदय,
इस लॉकडाउन के खिलाफ में यद्यपि विपक्ष के लोगों ने गरीबों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह कोई धरना प्रदर्शन बंद या एक भी नागरिक या मजदूर लॉकडाउन के खिलाफ में कहीं सड़कों पर नहीं आया। और सरती महोदय, फिर टीकाकरण प्रारंभ हुआ, मजाक उड़ाया गया टीकाकरण का, और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक 181 करोड़ 181.56 करोड़ लोगों को और टीका लग चुका है। शुरू में हेजिटेंसी थी, लोगों में संशय था, लेकिन किसी ने टीका के विरोध में कहीं कोई सड़कों पर नहीं आया। आपने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई सड़कों पर नहीं आया। लेकिन उपसभापति महोदय, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हजारों लोग सड़कों पर आ गए वैक्सीनेशन के विरोध में। लॉकडाउन के विरोध के अंदर न्यूजीलैंड में 40,000 लोग सड़कों पर आए, गिरफ्तार करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। सती महोदय, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कठोर लॉकडाउन लागू नहीं किया होता और जिस तरह से टीकाकरण का काम चालू किया, अगर वो नहीं होता तो 5 लाख नहीं बल्कि इस देश के अंदर 50 लाख लोग मरे होते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 45 लाख लोगों को और मरने से बचा लिया। और सती महोदय, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव या एमडी हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा? कहा इंडिया हैज डिलीवर्ड ओवर 16 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नियरली 100 कंट्रीज थैंक्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। आपने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स ने भारत की सरकार और मैन्युफैक्चरर्स को धन्यवाद दिया। सती महोदय, मैं लॉकडाउन का जिक्र कर रहा था, कनाडा के बारे में जानते हैं? कनाडा के अंदर कैनेडियन फ्रीडम कॉन्वॉय 22 1 महीने से ज्यादा समय तक जो अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर ब्रिज था, जो कनाडा को और अमेरिका को जोड़ता था, वहां के ट्रकर्स ने उसको जाम कर दिया। 21 दिन तक 12-12 घंटे हॉर्न बजाकर और कोविड के खिलाफ टीकाकरण का लोग विरोध करते रहे। ऐसे हालात कनाडा में पैदा हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर अज्ञात जगह पर जाना पड़ा। और सती महोदय, फिर भी जब वो ट्रकर्स को वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं रोक पाए तो सती महोदय, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। और कनाडा के इतिहास में यह पहली घटना है कि वैक्सीनेशन के विरोध में जो लोग सड़कों पर आए थे, उनको रोकने के लिए सरकार को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। सती महोदय, यह था कनाडा, यह था यूरोप। लेकिन सती महोदय, और ये वही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो भारत के अंदर किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हूं, और जब अपने देश के अंदर ट्रक वालों की हड़ताल हुई तो कहते कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। वही व्यक्ति है जिसने इमरजेंसी लगाया, हजारों लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया। और सती महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों का भरोसा था, उसी का परिणाम था कि कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आया, किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे वो टीकाकरण हो या लॉकडाउन हो। और आज हमने सफलतापूर्वक इस कोविड-19 का मुकाबला किया है। सती महोदय, बार बार पूंजीपतियों की बात होती है। मैं केवल पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से कि अगर 19 महीने तक इस देश के 80 करोड़ गरीबों को अगर 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त दिया गया, तो क्या अंबानी और अडानी के खाते में वो अनाज गया या इस देश के 80 करोड़ लोगों के घरों के अंदर वो अनाज गया? और सती महोदय, अभी तक 2,68,000 करोड़ का अनाज हम वितरित कर चुके हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 दिन पहले निर्णय लिया गया है, इसको 6 महीना और बढ़ाया गया है, और अब 80 करोड़ लोगों को हम 6 महीना जो और अनाज देंगे, उससे 80,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। निर्मला जी यहाँ बैठी हैं, हम बजट में उसका प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम किसी गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे, हम किसी गरीब को भूखे नहीं सोने देंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम
ये भारत में हमारी सरकार लागू कर रही है। उपसभापति महोदय, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और सभापति महोदय, अभी यूक्रेन का जो संकट आया, हमने केवल भारत के 20,000 लोगों को ही इवैक्यूएट करने का काम नहीं किया, हमने 18 देशों के 150 से ज्यादा नागरिकों को भी और यूक्रेन से निकालने का काम किया है। और इतना ही नहीं, तो हमने यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देशों को और 90 टन रिलीफ मटेरियल भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। सती महोदय, अफगानिस्तान से हमारे राजनीतिक संबंध नहीं है, फिर भी हमने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देने का ऐलान किया है। 5 लाख डोज वैक्सीन हम दे चुके, 13 टन लाइफ सेविंग मेडिसिन हम दे रहे हैं। और सती महोदय, बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका, जब भयंकर आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है, हमने श्रीलंका की भी चिंता की, पड़ोसी देशों की भी चिंता की, और $1 बिलियन यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन हम लोगों ने श्रीलंका को उपलब्ध कराया, ताकि वो एसेंशियल कमोडिटीज, फूड, मेडिसिन जो हैं वो भारत से खरीद सके। और अभी तक कुल मिलाकर $2.4 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद क्रेडिट के रूप में हम लोगों ने श्रीलंका को देने का काम किया है। सती महोदय, हम जब फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो किस प्रकार के विपरीत परिस्थितियां थी सबों को मालूम है। उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किया है, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों आता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बजट एस्टिमेट था 11.08 लाख करोड़, रिवाइज किया 12.5 लाख करोड़, और हमने कितना संग्रह किया अभी तक? 1,01,000 करोड़ ज्यादा अभी तक हम टारगेट से संग्रह कर चुके हैं, और 31 तारीख आते आते हम रिकॉर्ड संग्रह करने में सफल होंगे सभापति महोदय। और सभापति महोदय, और ये जो हमने संग्रह किया 13,63,000 करोड़ रुपए, ये 2021 से 38% ज्यादा है, 1920 से 36.6% ज्यादा है, और 18-19 प्री पेंडेमिक से 32.7% ज्यादा है। इसका मतलब है सभापति महोदय कि अब जो विकास, आर्थिक विकास की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और सभापति महोदय, जीएसटी की बार बार चर्चा होती है, और सदन को यह ज्ञात है कि अभी तक 13,41,000 करोड़ 13.41 लाख करोड़ हम जीएसटी में संग्रह कर चुके हैं। और ये पहला साल है जबकि एक साल में 5वीं बार हमने 1,30,000 करोड़ के टारगेट को क्रॉस किया है। यानी 5 महीना ऐसा है जहां प्रति माह हमने 1,30,000 करोड़ रुपया संग्रह किया है। सत्य महोदय, एक बड़ी चुनौती पूरे देश के सामने और सारे राज्यों के सामने, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन का वायदा किया गया था 5 साल के लिए, वो 31 जून को उसकी अवधि पूरी हो रही है। 1 जुलाई 2022 के बाद कॉम्पनसेशन नहीं रहेगा। राज्यों के सामने एक बड़ी चुनौती है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रति वर्ष राज्यों को नुकसान होगा। आखिर वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? और सती महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 5 साल के लिए एश्योर किया गया था कि प्रति वर्ष 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम प्रोवाइड करेंगे, और 14% से कम का अगर ग्रोथ होगा तो जो बीच का गैप है वो हम कॉम्पनसेशन से प्रोवाइड करेंगे। और सरकार ने यह भी कहा था कि यह कॉम्पनसेशन अपने खजाने से नहीं देंगे, एक अलग से कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट किया गया। कोयले पर, पान मसाला पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर, इन चीजों पर और लग्जरी गाड़ियों पर 28% से ऊपर टैक्स लगाया गया, ओवर एंड ओवर 28%, और उससे जो राशि आई वो कॉम्पनसेशन फंड में रखा गया, और उससे राज्यों को क्षतिपूर्ति का नुकसान की भरपाई की जा रही थी। लेकिन सती महोदय, जब 30 जून को समाप्त हो जाएगा कॉम्पनसेशन पीरियड, तो आगे क्या होगा? निर्मला जी यहाँ बैठी, जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि इसको 2026 तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, ये जो कॉम्पनसेशन 26 मार्च तक बढ़ाया गया है, उस दौरान जो कॉम्पनसेशन में राशि आएगी, तो इस बीच में भारत की सरकार ने राज्यों को लोन लेकर और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है। क्योंकि हमारे पास इतना सेस में पैसा नहीं था, राज्यों को जरूरत थी,
और 1.1 lakh crore in the year 2021 and 1.59 lakh crore in the year 21-22 and a कुल 2,69,000 crore बैक टू बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लेकर राज्यों को राहत पहुंचाने का काम किया है और ये लोन वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट और इसलिए जो 2.69 लाख करोड़ का जो लोन है उसमें 54,000 करोड़ इंटरेस्ट है यानी 3,23,000 करोड़ हमको रीपे करना है वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोन लिया था और इसके अलावा 20, 21 और 22 के अंदर जो एरियर्स है दैट इज अबाउट 3.16 लाख करोड़ क्योंकि 14% ग्रोथ हमने एश्योर किया था लेकिन कोविड में सरकार ने कहा कि 14% ग्रोथ देना संभव नहीं है हम केवल 7% ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे तो यानी कुल मिलाकर 6,39,000 करोड़ which includes 3.23 lakh crore as a interest plus the principal repayment और जो compensation arrears हैं तो 6,39,000 करोड़ यह रीपे करना है तो सती महोदय जो compensation को बढ़ाया गया है उसमें जो भी राशि प्राप्त होगी वो राशि 6,39,000 करोड़ को रीपे करने में खर्च हो जाएगी इसलिए क्या उपाय है आखिर राज्य क्या करें केंद्र क्या करे सती महोदय बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और इस समय रेट रेशनलाइजेशन के लिए कमेटी बनी हुई है लेकिन कोविड के कारण जो क्राइसिस की स्थिति है इस समय कोई हम टैक्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं हम टैक्स को बढ़ा नहीं सकते हैं ये उपयुक्त समय नहीं टैक्स बढ़ाने का इसलिए जीएसटी काउंसिल को इस बात का विचार करना होगा और ये जिम्मेवारी केवल केंद्र की सरकार की नहीं और जैसा मैंने कहा केंद्र ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि अपने खजाने से निकालकर हम 14% का ग्रोथ आपको कॉम्पनसेट करेंगे ये जो सेस की आमदनी होगी उसके द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जानी थी इसलिए सती महोदय जीएसटी काउंसिल को ये निर्णय लेना है कि आगे आने वाले दिनों में राज्यों को होने वाला जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो क्षति है उसकी पूर्ति कैसे होगी इसका एक निर्णय लेना होगा सती महोदय मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्रिप्टो के बारे में जितने भ्रम थे वो सारे भ्रम आपने दूर करने का काम किया है और आपने 30% इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एट 30% प्लस सेस एंड सरचार्ज मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा माइनिंग नॉट पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट 1% TDS इज फॉर ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन और उसी प्रकार सती महोदय क्रिप्टो NFT के बारे में भी माननीय निर्मला जी ने एक घोषणा की थी कि जो क्रिप्टो और NFT के बारे में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको भी रिस्क डिस्क्लेमर जो है उनको देना पड़ेगा लेकिन सती महोदय मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूँगा ये क्रिप्टो आखिर है क्या इट इज़ नाइदर अ कमोडिटी इट इज़ नाइदर एन एसेट इट इज़ नॉट अ गुड इट इज़ नॉट अ सर्विस तो ये है क्या इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है और सती महोदय मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या सती महोदय ये क्रिप्टो ये गैम्बलिंग है जुआ है ये एक प्रकार की लॉटरी है एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है एक प्रकार की गैम्बलिंग है आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है सती महोदय इसलिए जापान ने 55% टैक्स लगाया है जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया ने अप टू 45% यूएस ने 37% इसे मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या और सती महोदय जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है बिटकॉइन का 115% एथेरियम का 30% बिनांस कॉइन का 151% सो इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टिंग बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स महोदय अंकलेश्वर स्वामी अय्यर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इज नो अंडरलाइंग वैल्यू
not even a tulip of 17th century speculative bubble. 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के एक देश के अंदर जो ट्यूलिप का जो फूल होता है, होड़ मच गई, हर आदमी ट्यूलिप खरीद रहा है, उसका दाम 200 गुना चला गया और एक दिन अचानक जब बबल बस्ट किया तो हजारों लोग कंगाल हो गए। तो ट्यूलिप की तो कीमत कम से कम 1 रुपया होगी, लेकिन क्रिप्टो की कितनी कीमत है ये कोई नहीं जानता है। साथी महोदय, यूक्रेन ने लीगलाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को पिछले 7 दिन पहले। दुबई एडॉप्ट्स फर्स्ट वर्चुअल एसेट लॉ दुबई क्रिप्टो करेंसी में, और एक स्टडी के अनुसार 2021 में मोर देन 14 बिलियन डॉलर जो है वो क्रिप्टो क्रिमिनल्स मेड अ रिकॉर्ड 14 बिलियन डॉलर हाउल इन 2021। और आज ही टाइम्स ऑफ एक एक्सप्रेस में समाचार है कि केरल के अंदर अब्दुल गफूर नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो क्रिप्टो करेंसी के फेक रैकेट में शामिल था, और 1200 करोड़ का वो रैकेट था जिसमें लोग पकड़े गए हैं। और अब तो जैसे ही अब 1 तारीख के पहले इन्वेस्टर्स स्टार्टेड पार्किंग दीज करेंसीज इन प्राइवेट वॉलेट्स, और 8 बिलियन वर्थ क्रिप्टो एसेट एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि और इसके बारे में विचार हो। और इतना ही नहीं तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी जो गैम्बलिंग हो रही है गेमिंग के नाम पर, मैं गेमिंग के विरोध में नहीं हूं, और एक अनुमान है कि 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री केवल फैंटेसी गेम की और 2022 के अंदर होगी। तो कैसे रेगुलेट किया जाए ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन लेंडिंग को? आज ही समाचार है कि करीब 40 से ज्यादा डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस फाउंड टू बी रन बाय चाइनीज नेशनल्स। तो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन लेंडिंग, सोशल मीडिया, एडटेक, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको कैसे रेगुलेट किया जाए? और ये जो आईटी कानून बना हुआ सौती महोदय, ये 20 साल पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो आईटी एक्ट है उसको नए सिरे से ड्राफ्ट किया जाए ताकि वर्तमान की चुनौतियों का जो मुकाबला कर सके। और फिर मैं निर्मला जी से भी आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी कोई एक पेपर पब्लिश किया जाए IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर टू डिवाइस अ फ्रेमवर्क, ताकि पब्लिक कंसल्टेशन में कि क्या क्रिप्टो है, क्या NFT है, क्या किया जाना चाहिए, और वर्चुअल डिजिटल करेंसी की जो घोषणा की गई है उसके बारे में भी जल्द से जल्द विचार किया जाए। श्री महोदय, मैं इसके बारे में एक और बात कहना चाहूँगा। ये क्रिप्टो करेंसी के बिक्री पर केवल 18% GST लगता है, और वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एक्सचेंज चलाने वाले लोग हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर 18% टैक्स लगता है। मैंने 0 आवर में उठाया, तो मैं फिर इस बात की आपसे मांग करता हूं कि बिकॉज इट इज नो एसेट, नो सिक्योरिटी, नो कमोडिटी, नो गुड्स, नो सर्विसेज, एंड क्रिप्टोज आर सिमिलर टू लॉटरी, कैसीनोज, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, और इन सारी चीजों पर पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 28% टैक्स लगता है। अगर आप लॉटरी में 100 रुपया लगाएं तो आपको 28 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कैसीनो के अंदर बेट लगाएं 1000 रुपया तो 28% टैक्स देना पड़ेगा। और गोल्ड पर भी 3% GST है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि GST काउंसिल को इस बात का विचार करना चाहिए कि भले वो 1% हो, 0.1% हो, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो क्रिप्टो का है उस पर GST लगाने के बारे में और सरकार को विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, बैंकों के बारे में इस सदन में काफी चर्चा होती रही है। KV कामत, जो इंडियन बैंकिंग के रिटेल गुरु माने जाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक लेख में लिखा, इन मोर देन 50 years आई बीन इन बैंकिंग बिजनेस में, 50 साल से बैंकिंग बिजनेस में हूं, आई हैव नेवर सीन देयर बैलेंस शीट्स एज क्लीन एंड हेल्दी एज टुडे इन टर्म्स ऑफ बैड एसेट्स। 50 साल में आज तक हमने बैंकों की इतनी बेहतर व्यवस्था को नहीं दिखा है। इंडियाज बैंकिंग इंडस्ट्री is in its best shape in terms of quality of assets and quantum of capital. एक रेटिंग एजेंसी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च वो लिखता है, बैंकिंग सिस्टम हेल्थ इज एट इट्स बेस्ट इन डिकेड्स। सती महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 2018 में NPA बढ़कर 5 गुना NPA बढ़ गया। हमारी आलोचना होने लगी कि 14 में आए
और एनपीए 5 टाइम्स बढ़ गया, 2.16 लाख करोड़ से 10.36 लाख करोड़। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, ये अगर एनपीए बढ़ा तो इसलिए बढ़ा कि आपने एग्रेसिव लैंडिंग का काम किया अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर। टेलीफोन पर लोगों को बैंकों से पैसा दिया जाता था, पैरवी के आधार पर दिया जाता था। इसलिए 2008 में जहां 25 लाख करोड़ की बैंकों की लैंडिंग थी, वो 6 साल में बढ़कर 68 लाख करोड़ उसकी लैंडिंग हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू की कमेटी बनाई, इसका रिव्यू किया और एनपीए को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और हमने कानून को कड़ा किया। सरफेसी एक्ट में 3 महीने की जेल का प्रावधान किया। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो वो कोई भी डिबार्ड फ्रॉम फ्लोटिंग न्यू वेंचर्स फॉर 5 years, वो कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो वो कोई कैपिटल मार्केट में वो कोई नया इशू रेज नहीं कर सकती है। और समझती इन सारी चीजों का क्या परिणाम हुआ सौती महोदय? 31 मार्च 2018 को जहां एनपीए 11.18% था, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2021 में घटकर इट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 11.18% टू 6.39%। यह नरेंद्र मोदी की सरकार कि आज बैंकों की हालत हमने इतनी बेहतर कर दिया सौती महोदय। और सौती महोदय, बैंकों को कैपिटल की आवश्यकता थी। बैंकों की हालत जब खराब होने लगी तो हमने बैंकों को कैपिटल देने का काम किया। और सौती महोदय, कुल मिलाकर 3,26,000 करोड़ 3,36,000 करोड़ दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड टू द बैंक्स एज ए कैपिटल इन्फ्यूजन। 18 में जब हालत खराब थी एनपी कारण में 90,000 करोड़ इन्फ्यूज किया, 19 में 1,06,000 करोड़। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, निर्मला जी यहाँ बैठी हैं, इन द ईयर 21-22 हमने बजट में प्रोवाइड किया था 15,000 करोड़ हम इन्फ्यूज करेंगे कैपिटल के रूप में, लेकिन केवल 4,600 करोड़ की आवश्यकता पड़ी। 10,000 करोड़ की बचत हो गई और 23-24 में बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया। हमको कोई भी बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथी महोदय, यह है कि आज बैंकों की स्थिति जो इतनी बेहतर हुई है और बैंकों की आमदनी बढ़ गई। साथी महोदय, एसबीआई की आमदनी 20,000 करोड़ प्रॉफिट इन 2021, जहां 16-17 में 1,300 करोड़ का लॉस था। बैंक ऑफ बड़ौदा 18-19 में लॉस था 8,000 करोड़, अब प्रॉफिट है 828 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक 2,000 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, जहां 8,000 करोड़ का लॉस था 1920 में। और सती महोदय, आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई, और चुनाव में कहा जाता था कि मोदी चोर है, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, जितने मोदी सारे के सारे मोदी चोर है, आपने भगा दिया। लेकिन सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो 22,585 करोड़ का जो फ्रॉड करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पैसे को जिन्होंने साइफन किया था, डाइवर्ट किया था, मैं सदन को बताना चाहूंगा, आउट ऑफ दैट 22,585 करोड़ 19,111 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। 22,585 करोड़ में 19,111 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है और 15,113 करोड़ की संपत्ति बैंकों को वापस सौंप दी गई है। और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, बैंकों ने 15,113 करोड़ की जो संपत्ति उनको वापस मिली, उसको बेचकर 8,000 करोड़ बैंकों ने पैसा प्राप्त कर लिया है। सभापति महोदय, कोई बचकर नहीं जाएगा नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो और मेहुल चोकसी हो। और सभापति महोदय, हमने तो कार्रवाई कर दिया। सभापति महोदय, हमने तो कार्रवाई कर दिया। और आपकी क्या स्थिति सभापति महोदय? इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 128 केसेस पेंडिंग हैं 6 राज्यों के अंदर जब बैंक फ्रॉड के केसेस हुए, और सीबीआई ने मांग किया कि हमको कंसेंट दीजिए, परमिशन दीजिए, क्योंकि आपने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया। 1.5 साल हो गया, आपने कंसेंट देने से इनकार कर दिया। और सभापति महोदय, 21,000 करोड़
128 केसेस ये पेंडिंग है, 1.5 साल से राज्य सरकार कंसेंट नहीं दे रही है। प्रफुल्ल पटेल साहब बैठे, बात कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी से। सबसे ज्यादा 101 मामले जिसमें 20,312 करोड़ यह महाराष्ट्र में पेंडिंग है, पंजाब के अंदर 298 करोड़ और बंगाल में 6 केसेस पेंडिंग है, एक का भी कंसेंट नहीं दिया, 293 करोड़। सती महोदय, आप कहते हैं कि विजय माल्या पर आप कार्रवाई नहीं करनी, तो कार्रवाई कर दिया। अब आप जो, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्रॉड है, ये जो पीएसबी का कोई कहीं कोई चुकी, वो तो कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। ये तो जिन राज्यों ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया, जहां पर कि पूछने की आवश्यकता पड़ती है। सती महोदय, महाराष्ट्र के अंदर ये मनोज जायसवाल कौन है, ये अभिजीत जायसवाल कौन है, अभिषेक और मुन्ना राजीव जायसवाल कौन है, जिनका 1.5 साल से कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, जिनका 4,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड आपने परमिशन नहीं दिया। यस बैंक के सीएमडी राणा कपूर, इसका 1,500 करोड़ का कंसेंट 1.5 साल से पेंडिंग है, आपने क्यों नहीं दिया सती महोदय। और एबीजी शिपयार्ड की बात आई, आपने 14 महीने तक कंसेंट नहीं दिया, जबकि बैंक्स ने फाइल कर दिया था कंप्लेन। एफआईआर करने में 14 महीने इसलिए लगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने 14 महीना लगा दिया, लेकिन उनको कंसेंट नहीं दिया। और जब जाकर कंसेंट दिया तब जाकर सती महोदय पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, इंडिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। और 400 बिलियन से ज्यादा का 10 दिन पहले ही, और हमने एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर लिया सती महोदय। और उसी प्रकार, और पीएम ने कहा कि लोकल गोज ग्लोबल, हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड, माइलस्टोन इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 23 बिलियन का टारगेट हम पार करने जा रहे हैं। आज चावल का एक्सपोर्ट, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है, हम 90 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का पूरा टारगेट जो है उसको हम पार करेंगे। और वीट का एक्सपोर्ट सती महोदय 380% हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सती महोदय। और यूक्रेन रूस क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो गेहूं का संकट पैदा हुआ है, आज हमारे किसानों की यह स्थिति है। मध्य प्रदेश, पंजाब, बाकी राज्यों के अंदर एमएसपी से 200 रुपया ज्यादा किसानों को बाजार के अंदर मिल रहा है सती महोदय। केवल इन्हीं चीजों में नहीं, तो मोबाइल फोन, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एप्पल ने 12,000 करोड़ का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने का काम किया है। सैमसंग ने 20,000 करोड़, जब 2017-18 में 1,300 करोड़ का स्मार्टफोन हमने एक्सपोर्ट किया था, वो 32 टाइम्स बढ़ गया। और 2021-22 में 42,000 करोड़ से ज्यादा का स्मार्टफोन हमने भारत से और एक्सपोर्ट करने का काम किया है। जबकि सेमीकंडक्टर्स की कमी थी, लॉकडाउन के कारण डिसरप्शन था, चाइना से तनाव के कारण कंपोनेंट्स के आने में देर थी। लेकिन ये पीएलआई स्कीम का कमाल है, जब एप्पल और सैमसंग ने भी अपना सेंटर यहां पर स्थापित कर लिया है। सभापति महोदय, 1 रैंक 1 पेंशन की बार बार बात आती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी, जिस तरह से ओआरओपी भारत की सरकार ने लागू किया है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और सती महोदय, पूरे डिफेंस बजट का 1/5वां हिस्सा केवल हमारा पेंशन पर जाता है। और सदन को मैं इतना ही बता दूं, तो 13-14 में 45,000 करोड़ पेंशन लायबिलिटी थी, वो बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी हमने अपने 36 लाख से ज्यादा जो सैनिक और सिविल डिफेंस के लोग थे, उनको ओआरओपी को हमने लागू करके अपने वायदे को पूरा करने का काम किया है। सभापति महोदय, बार बार इन्फ्लेशन की चर्चा होती है। शक्ति सिंह गोहिल जी तो 2/3 समय केवल इन्फ्लेशन पर ही लगा दिया उन्होंने। मैं सदन को बताना चाहूंगा, अमेरिका जैसा देश, हम तो भारत हैं, 40 साल में जैसी महंगाई अमेरिका
को फेस करनी पड़ रही है। आज तक अमेरिका ने वैसे महंगाई को नहीं देखा था। 7.9% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन February 20, विच इज 40 ईयर्स हाई। यूके के अंदर 30 साल में सबसे ज्यादा चरम महंगाई 6.2%। और यूरोजोन, जिसमें 19 देश जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5.8% जो है वहां पर इन्फ्लेशन की रेट है। और भारत में इन्फ्लेशन की रेट क्या है? 6.07%। और मैं ये भी बता दूं उपसभापति महोदय कि जब आपकी सरकार थी और जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, हमारे यहाँ तो 2022 में इन्फ्लेशन रेट 6 के आसपास है। 2008 में आपकी सरकार थी, इन्फ्लेशन रेट था 8.4%। 2009 में 10.9%। 2010 में 12% इन्फ्लेशन रेट था। 2012 में 9.3, 2013 में 11.1। तो जिनके राज में डबल डिजिट था इन्फ्लेशन रेट, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्फ्लेशन को, आरबीआई का जो बैंड है 6% ±2, उसके विदिन जब हमने उसको रोक कर रखा है, तो आप कहते हैं कि महंगाई दाम बढ़े हैं। सभापति महोदय, कौन इनकार करेगा? यूक्रेन रूस अगर युद्ध नहीं होता तो आज पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता। आज महंगाई पर हमने नियंत्रण लगा दिया होता सभापति महोदय। और सभापति महोदय, जो ग्रोथ रेट का आंकड़ा है, यूक्रेन की लड़ाई, कोविड, चीन पर तनाव, सीमा पर भारत चीन सीमा पर तनाव, इन सारी परिस्थितियों में भी, और जो 2021-22 का जो ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा, फिच जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है 8.70, वर्ल्ड बैंक 8.30, IMF 9%, ये है कि 21-22 के अंदर भारत का ग्रोथ रेट दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाले देशों में से एक होगा। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये फिच, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, IMF और RBI का आंकड़ा है। और सभापति महोदय, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में मैंने कहा, न जुलूस निकला, न प्रदर्शन हुआ, न लॉकडाउन का कहीं विरोध हुआ, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे देशों में वहां के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है। और एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम का जो एक साइट है जो सर्वे करता सभापति महोदय, उसने पाया कि नरेंद्र मोदी 77% की रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं। और सभापति महोदय, बिडेन की रेटिंग कितनी है? 41%, वो 7वें नंबर पर हैं। और मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर नंबर 2 पर हैं। सभापति महोदय, मैं केवल ये बता रहा हूं सभापति महोदय, ये कोई सामान्य काम नहीं था कि जिस प्रकार से हमने कोविड का मुकाबला किया, जिस प्रकार से हमने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। इसलिए अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं हो पाता। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार थी, उनकी सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये व्यक्ति जो टकराना जानता है, बुल्स बाई हॉर्न जिसको कहते हैं, सामने से पकड़कर वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हर चुनौती को अवसर में बदलता है और सफलता के कदम उसको चूमने का काम करती है। और अंत में इतना ही कहूंगा सभापति महोदय, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। जिनको केवल छत तक जाना है वो सीढ़ी पर चढ़कर चले जाए। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद मुझे बनाना है, रास्ता खुद मुझे बनाना है। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। The next speaker is TKS Elangobal. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Repeatedly, I have been talking about the budget exercise, and repeatedly, I have been asking whether what good this budget has done to the people who were suffering for the past 2 years, their daily wages particularly. There is nothing in this budget for the daily wages. That is my grievance. It helps others, not the daily wages. And they were jobless for quite some time. When we ask about this, they talk about
the injection for COVID dose, vaccination. They are going to die because of want of food. They need food. They have no jobs. They don't know what to do. What this budget has done to that section of the society, I don't know. There is nothing here. Our honorable member Sushil Kumar Modi was talking about the profit in the banks. I know how the profits can be made. The banks run by the funds from the depositors. If you reduce the interest for the depositors, profit will go up. It's a simple logic. And what is the rate of interest for the depositors 7-8 years back, and what is the rate of interest the banks are giving today? That is the question. So increasing profit in a bank is a simple logic. And I don't know how much fund from other sources were transferred to the profit-making exercise of the individual banks. I think I have heard that the pension funds from the employees, they were all transferred to the profit, just to show that there is a profit. So a budget should address, the role of a government in a democratic government in the 20th century should be to protect its citizens, to provide socio-economic protection to its citizens. What this budget has done, they talk about rich people, they talk about getting money back from the borrowers, but what is the progressive idea, progressive concept this government has for the people who are suffering? When the diesel price, petrol price go up, it is not a simple thing. It will have a cascading effect on all materials, all food materials. The daily wager could not even afford to buy. He eats half of what he was eating earlier. That you don't know. His consumption has gone down. Even the NSSO had said that domestic consumption had gone down. NSSO is not me. It's not Congress party or DMK party. It is a government's organization. They had said that the domestic consumption had gone down. Why? Because people cannot afford to buy anything. See, for a small vendor from a village, if he wants to take his things for sale to the nearest town, he uses a moped, a small motorcycle. He has to pay more on petrol. He goes there, but he has to increase the cost of his the product which he is going to sell. But there is no buyer. So he has to come back. He will also suffer. See, look at the people who are suffering. Don't talk of banks, don't talk of other things. The duty of the government is to ensure that the people does not suffer. What is can you give me figures on the below poverty line families today? Why they are doing it? What is the role of the government in protecting them? Nothing. There is nothing in this budget. Except for some colorful figures, there is nothing in the budget. This budget has failed in providing any good thing for the common man, the poorest of the poor. You are increasing prices. You say that the prices, you talk about everything. Gross domestic product, GST and other things. But what you are providing to the poor, what I cannot see anything from this budget which will help the poorest of poor of this country. Defense, okay. I don't say that there is nothing good in this budget. But the role of a government, what is the role of the government? We elect the government. We elect the government. And with a population like India, which has more than 70% of poor, the duty of the government is to protect the poor, give economic security, give social security, let them live. You don't know, you can vaccinate people and save their lives, but you have to try to stop people from dying without food. What your government has done, there is nothing in this budget. Everything goes up, all prices go up. How can a person buy food grains, food materials for his use? One thing, sir, in 2019 this government had said, repeatedly I am telling you,
there will be 150% of product cost for agriculture will be provided as MSP. Now the farmers who had withdrawn their agitation after these three bills were withdrawn, they are demanding, you tell me about MSP. You are not talking, the government is not talking. The government does not talk about the MSP because that is the promise made in the House. The 150% MSP as recommended by MS Swaminathan committee was made in the House. Prime Minister very proudly said, this Congress government did not act on MS Swaminathan committee report. We acted. What is the act? There is nothing. This very simple promise of providing 150% of the cost price as MSP is not announced even today. Private players, as our friend Shakti Singh Goyal was talking about Jio. There was a joke in our, which I read in the Facebook. Somebody, small boy asked his father, "Father, Jio is a government company?" Father answers, "No, my dear son, the government is Jio's company." That is the joke. So that much of privatization is taking place in this country. Why? Make in India. When what we are making in India is stopping. And you call for make in India. So the problem with this government is they want to say something which is factually wrong. They want to do something which will not do good to the poor, but do good to the rich. And the budget, every budget, ninth budget, see, I am repeatedly telling that every budget has a very promising features, but in practice, nothing is promising. Every year we are deteriorating. Our poor still stand as poor. With these words, I conclude, sir. Thank you. Thank you. The next speaker is Dr. Amar Pradhan. Patnaik. I'm sorry. Patnaik. Sir, I rise to speak in favor and support of the Appropriation Bill 2022 and the Finance Bill 2022. However, while doing so, sir, I would like to make certain suggestions, certain concerns that India should be worried about, whether this government or when they were there, all of us should be worried about, all members of parliament, the entire country should be worried about. So Article 38 of our Constitution, amongst many other things, it says that the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals, but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. My concern is, which I want to flag here, whether we have achieved this. So, allow me to quote the Gini coefficient, which is a measure of inequality in society. From the year 2000 to the current year, 20 years period, the Gini coefficient has increased from 74.7 in 2000 to 82.3 in 2020. So while we are talking about growth, the GDP growth, the economic growth, increasing the size of the cake, what we have actually increased also simultaneously is the inequality in society. We have to think about this. We have to think about our economic policy as to why the inequality is not decreasing. What we call as growth is not becoming as inclusive as we would have liked, where the GDP, economic GDP is increasing. The maximum increase was in fact during the period 2000 to 2006. Now if you look at Gini index, another indicator of the World Bank, it has also increased from 34.4 in 2004 to 35.2 in 2020. Amartya Sen once said
that there is a kind of tolerance to inequality in this country. It is seen in what is considered acceptable as a means of judging the performance of the economy. If the incomes of a few people rise, that is treated as evidence for economy doing well. The tolerance for that idea is worrying. It's not only Amartya Sen. If you look at the 2017 World Bank report, they exactly say the same thing, because too much of inequality would give rise to social strife, civil strife, and the Arab Spring kind of situations. So currently, the economic survey says, I quote the economic survey, last year's economic survey, that the total wealth of the middle class, which is 40%, which was 45% of the total income wealth in 1981, it decreased to 22.9% in 2020. 3.2 crores people, middle income population, the size of the middle class decreased. 5 out of 6 multidimensionally poor are SC, ST or OBC. 12% of poor live in female-headed households. So therefore, we need to have greater investment in education, health, nutrition, and the purchasing power of people at the bottom of the pyramid, income wealth pyramid, has to increase. But it is very well said to demand all this and ask for all these things to happen unless we raise the revenues for it. The finance bill is a document which basically lays out the plan for raising revenues for it. Now, how do you do it? Sir, the tax GDP ratio, sir, in our country, if I quote the figures, it has been hovering around 10.7% in currently, and last 5 years, 9.9%, 11.22%. There has to be something to increase our tax GDP ratio. Some way, some method has to be devised. One of the ways which I am going to plead for here is and which I think is something that the finance bill has missed, is the reintroduction of wealth tax or a COVID tax. How do you generate resources for meeting social sector expenditure? I spoke in my budget speech, sir, that the social sector expenditure as a percentage of GDP, not in gross terms, has actually remained almost at the same level. Unless we increase that, obviously the inequality indexes will not improve. Now, I have, sir, certain figures to say that if you impose this tax, as per the Oxfam India report, 1% of wealth tax on the 98 billionaires would finance the Ayushman Bharat for more than 7 years. 1% tax on wealth of 98 billionaires can take care of total expenditure for school education and literacy. 2% tax on individuals with an income of over rupees 10 crores could increase the ministry's budget by an astounding 121%. I would plead that we need to do something to get this revenue so that we can spend on social sector. This is on the appropriation account in macro terms. Now let me go to the finance bill, which has significantly good things in terms of capping the long-term capital gains tax at 15%, the SOCOS notice being made mandatory before you readjust the taxes after a reassessment. There are many good things. The dispute resolution panel. But I think the biggest concern, as Sushil Modi ji was also saying, about the digital assets. While the definition is not clear and the regulations are not there, therefore naturally it is understood that the taxation guidelines are not very clear. He had made suggestions to increase the taxes. I leave it to that, but before that, very importantly, one has to reach the definition. What constitutes a virtual digital asset in an age in which technology is literally generating new virtual private digital assets almost every year or every second. There is a confusion over there as to the set-off of loss on VDA with capital gains on transfer of VDA. Now, if it happens during the same year, whether the set-off should be happening or not, on the same kind of VDA. Now, that's something I think needs clarification.
On the TDS, the problem is of traceability. If the buyer may not even be able to identify the seller at all, the buyer may not be able to identify the seller. In that case, how do you collect that particular tax? And also the cost of acquisition. So I think the virtual digital assets ecosystem has to be defined in a much bigger and much broader way. Honorable Finance Minister had already clarified. I think we have to act very fast in this now that the tax has been imposed already. I will talk about the unexplained cash credit. I think it's a very good thing. Only problem is whether the trade payables, bank borrowings, and credit card payments would be included or not, because currently it looks as if they would get included. The faceless assessment scheme, sir, which everyone is talking about, and I'm sure each one of us who has been paying income tax has faced some kind of technical glitch or not. I think that still requires attention from the government to solve that. But more importantly, no acknowledgement is even given of a successfully filed submission. I think that is very important. Many taxpayers have told me about it. Now I come to the cess and surcharge, sir. So the cess and surcharge has increased 5 times during the last 10 years, 5-fold. 0.9% of GDP it was. In 2011 and 12, it has gone to 1.7% of GDP. While the cess and surcharge has increased, what has happened, however, is that the gross tax revenue has decreased from 10.4% of GDP to 9.9% of GDP. The result is a pressure on the state's finances, because the devolution to the states has decreased to that extent. And currently, if you take everything together, the devolution to the states has actually decreased to a 30% level, 30% of the gross tax revenue. Now, the CAG had recommended, the Comptroller Auditor General of India had recommended that the education cess and the health cess that is collected, there should be proper procedure for allocating it. I had spoken in my budget speech that it is actually currently being taken to actually fund the expenditure which was already meant to be there. It has not actually augmented it, because the cess is supposed to have augmented it in a specific or particular aspect of health or education. There is no cap on cess and surcharge. Honorable Chief Minister of Orissa, Naveen Patnaik, has repeatedly written to the center that let cess and surcharge be made a part of the shareable pool then, unless you put a cap on it and you spend it for a specific purpose as it was intended to be. So last point, sir. So last point is the Orissa's demands. I'll speak in very brief. We are moving in technology. The budget emphasized heavily on technology, rightly so. But 25% of villages in Orissa are without internet connection. 25%, 6,999 villages out of 25,000 villages. And it requires 2,500 mobile stations, towers, to meet this. When will that happen? Even now, 1,623 crore of GST compensation is pending. Subsidy to be returned by the FCI for procurement of paddy, which is one of our most significant agricultural operations, post-harvest operations, is still pending to be given. And there is no clarity as to whether Government of India would lift 15 lakh metric ton of fortified parboiled rice. About 12 lakh beneficiaries are still waiting for that Prime Minister's Awas Yojana houses. When we are having a budget which will address common people, all sections of society, I really do not understand why these specific areas of concern given by the state of Orissa could not be met. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Patnaik. The next speaker is V. Vijay Reddy. Thank you, Deputy Chairman, sir. Vice Chairman, sir, thank you. Sir, I raised to support the appropriation bill and also Finance Bill 2022, despite some anomalies, which I would like to bring it to the notice of the Honorable Finance Minister through you, sir. Sir, the first point is tax exemption limit.
Sir, between 2014 and 2022, the cumulative inflation has increased by 48%, whereas the tax exemption limit has remained the same at 2,50,000 rupees since BJP government has come to power. Sir, I bring it to the notice of the Honorable Finance Minister that there has to be a parity between the taxation and inflation and maintain the minimum exemption limit. Sir, the parity between the taxation and inflation is needed because of the falling income, raising inflation, and stagnant tax relief. The common man cannot survive. This has to be realized by the Honorable Finance Minister. The second issue, declining the savings of taxpayers. Sir, Finance Minister Madam, 2018 and 19, the Employees Provident Fund interest rates since then have been falling, and 18-19 it is 8.65%, and as of today, 21 and 22, it has come down to 8.1%. The current rate of 8.1% is lowest the interest rate which is being paid to the Provident Fund subscribers in the last 44 years. This will have a definitely negative impact on the savings of the 5 crore Indian population. Sir, the National Pension Scheme is the only pension scheme, saving scheme, where tax is levied on maturity, on payment of maturity, which is really deplorable, and I request the Honorable Finance Minister to look into it and exempt the payment that is received by the subscriber on maturity, sir. No tax reforms has been made to make NPS, National Pension Scheme, lucrative for the taxpayers by the NDA regime, sir. Sir, COVID treatment. The expenditure that is reimbursed for COVID treatment of the family head or the family members is deductible, and it is a welcome move by the government, sir. However, the point what we have to realize now is why this? Because the reimbursement occurs when there is no insurance coverage. So there is a need to encourage the health insurance, which can be made affordable to masses, and it can be made affordable by the masses only if GST at the rate of 18% is reduced to nil. I request the Honorable Finance Minister. Honorable Finance Minister may say that it is not in our hands. It is in the hands of the state and GST Council. But that is not the reply, sir, what we expect from the Honorable Finance Minister. Though the authority lies with the GST Council, it is the BJP government which is responsible for that, and it can take up the issue, because there are so many states where the BJP is in power, and they can take up the issue in the GST Council and reduce the GST on insurance from 18% to nil, sir. Sir, the next issue is disinvestment of PSUs and public sector banks. And Honorable Finance Minister, Madam, by amending the provisions of carry forward losses, you have made the setting of losses, sir. Under section 79, you are enabling the disinvestment more easier. Sir, the disinvestment of where some of the PSUs are being sold by part, and some of the PSUs are being sold in one go, altogether to a private parties. Sir, disinvestment process of 18 PSUs out of 36 PSUs is complete in some respect or other. The sale of PSBs or GIC, IDBI is already privatized 2 of the PSBs, sir, and 1 general insurance company also is being privatized. Sir, today and tomorrow, All India Bandh is called for only against the privatization. So we, the state government of Andhra Pradesh, is supporting the Bandh and opposing the privatization of public sector undertakings. Sir, the public, what is expected of the PSUs by the general public at large? General public of this country at large expect
the PSUs would contribute to the develop the critical infrastructure and provide affordable goods and services, and third, generate lakhs of employment, jobs, creation of jobs. Sir, it is these PSUs, and I refer to the Visakhapatnam steel plant, during the pandemic has helped the public at large, and which is being privatized now, and who will take care of the public if you start privatizing all the public sector undertakings which are generating profit or likely to generate the profits. Sir, Vizag, coming to Vizag steel plant. Andhra Pradesh is the biggest victim of central government decision to privatize PSU, sir. And the state government has been agitating against the privatization of RINL for the last 1.5 years. Nothing. And BJP, the ruling dispensation is not able to hear anything sitting in Delhi. What the people of the state who are crying there in Visakhapatnam, sir. Sir, central government wants to privatize VSP, that is Visakhapatnam steel plant, for the simple reason that it is incurring losses. In reality, it is not incurring losses, sir. I request the Honorable Finance Minister, Madam, to go into the records, and for the current year, it is 1,000 crore profit, sir. And sir, what has been invested by central government? The central government initially has invested about 5,000 crores in Visakhapatnam steel plant. Against investment of 5,000 crores for the last decades, how much it has got back? It has got back by way of dividends about 51,000 crores when it was earning profits. Just because in the recent past, it has incurred the losses, and the decision to privatize Visakhapatnam steel plant is really deplorable against the interest of the public, sir. And I request the Honorable Finance Minister, Madam, to scrupulously follow 3 Rs, that is restructure, revamp, and revive the public sector undertakings rather than privatizing them, sir. Sir, why? Why Visakhapatnam steel plant is right now is incurring losses, not right now, in the past? Because central government has not allotted the mines to that, captive mines. And secondly, central government has refused to restructure the debt and waive the interest. It is because of these 2 reasons that it has incurred losses for a period of 5 years or so, sir. Sir, GST compensation. Sir, I heard the reply of Honorable Finance Minister when Finance Minister has responded to the question in the question hour, and it gave an impression that Madam has extended the GST compensation to states for a period of 5 years. I have repeatedly seen the video and tried to understand what Madam has said. Madam has said that the surcharge, what is levied, would be extended for another period of 5 years for the central government to repay the loans that it has paid to the compensation that has been paid to the states. In fact, Finance Minister Madam has not extended the compensation period to the state, payable to the states. I request the Honorable Finance Minister Madam to kindly reconsider and extend the period of compensation payable to the states for another period of 5 years. Sir, 2 more points, sir. 3 more points, sir. Cryptocurrency. Sir, it is very important, sir. Cryptocurrency. Another 2 minutes are there. Cryptocurrency. For the last 4 decades or 5 decades, Congress has ruled the country, and now BJP is ruling the country. I bring it to the notice of the Honorable Finance Minister that there is a possibility of misusing the cryptocurrency, and I humbly request the Finance Minister, Madam, to address the issue, sir. And sir, any transaction that is not routed through the exchange, there are about 150, less than 150 exchanges in the world, sir, cryptocurrencies exchanges. Any transaction that is not routed through the exchange, and the transaction that takes place between the 2 individuals, myself and my friend Rameshji, how the government will come to know? See, according to me, there is a possibility of Congress or BJP opening 90 crore account and transfer the funds through DBT, sir. Direct benefit transfer scheme to buy the voters, to lure the voters. So this has to be addressed, sir. And finally, sir, very important amendment to the Finance Act. Madam,
Madam has proposed and amended Section 147 of the Income Tax Act, which Congress party has misused for 4 decades, sir. Sir, assessing officer, there the words that have been omitted from the section is, according to 147, an assessing officer who has a reason to believe that the income has escaped assessment, he can reopen the assessment. Now, that reason to believe has been omitted and dropped by the Honorable Finance Minister, Madam, last year. Now, assessing officer has got an unfettered freedom. Whether he has a reason to believe or not, he can reopen the assessment. Now, we are the political parties and regional political parties on which the ruling dispensation can take the vengeance. And earlier they have taken the vengeance and they have foisted, so Congress party has foisted so many false cases. So I request the Honorable Finance Minister, Madam, to kindly look into 147 and then restore the amendments that have been made in the last year, sir. And last point, sir, Section 10, subsection 23C. The charitable institutions, they are all charitable institutions. They are not discretionary trust. Charitable institutions which are covered and comply with the conditions of Section 10, subsection 23C have been, and the conditions have been made more stringent and imposed, and stringent conditions are imposed at par with those of the trust covered under Section 11 and 12. By doing so, we are not doing justice to the charitable institutions, sir. I request the Honorable Madam, Finance Minister, Madam, the government can very well delete Section 10, subsection 23C and make all the trust claim benefits under Section 11 to Section 13 of the Income Tax Act. Such a step will simply simplify the law, and there will not be any separate category of special status of the trust claiming exemption under Section 1023C, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. The next speaker is Dr. V. Shivadathan. Respected Chair of the Honorable August House, here our Honorable Member Vijayasai Reddy referred the struggle of workers, and also he supported the struggle. Today, while we are sitting in the House, while our workers of the country is on the street, their demands is directly linked with the policy of the government. Sir, they are demanding for a better life for the people of our nation. They are demanding better education. They are demanding better food, better clothing for everybody in our nation. One of the great poets, Pablo Neruda, told us that he was asked, why you are not speaking on the beauty of the native country? Why you are not speaking on the big mountain of his native land? Why you are not speaking the sweet sound of the river? Then he answered in his poem that, come and see the blood in the street. Come and see the blood in the street. Sir, I think this is the very important point what Neruda told us. So here, I try to recite 2 lines. जब गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कड़ी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं. When the garden needed blood, you have cut our necks. Even though you are telling us the garden is yours, not ours. Sir, I am telling, sorry, this is not work in our nation. Our nation, our great nation, India is built by the sweat and blood of the workers
in our country. India, the great nation built by the sacrifice of the peasants. India, the great nation built by the martyrdom of youths. So this country, the workers will fight against the policies of the government. So the fighting spirit of workers you will see in the street. Sir, the government the union government is trying to help the corporate houses, big corporate houses, and they are trying to help them to exploit the people in various ways. We are seeing these all things in different ways. The food, employment, health, and food, and education, and other facilities are very important for the development of the society. But existing government is not ready to invest proper amount for the development of the society, for the development of the marginalized communities. They are not ready to help, try to eradicate malnutrition, poverty, these kind of illness. They are neglecting education and health facilities for the nation. The finance minister, respected minister, says there is a record GST collection, but the marginalized communities are not getting proper share for them. So, sir, the budgetary allocation, the figures are clearly shown that the common people will be charged and richest will be benefited. This is the existing condition. Sir, again, I am telling, there was a lot of incidents which prove the anti-people approach of the government. One of these, sir, related to the midday meal system. 1,500 crore rupees has been reduced in this year present budget. So it will affect the students, especially those who are from the marginalized section. Sir, currently in India, young children are facing lot of crises. They are facing different problems. We see child mortality, maternal mortality, stunted growth, wasting, and anemia. So the number of anemic children in India is the largest in the world. Sir, now the world is discussing the situation in Sri Lanka. There, the common people is in the long queue for getting a piece of bread and water. Sir, I am adding something related to this, sir, but in India, the anemic children is 94 million. Sir, 94 million, it means this 94 million means this is 4 times of entire population of Sri Lanka. That means 4 crying Sri Lankas are here. Here in India, starving Sri Lanka, 4 starving Sri Lanka is here, sir. So again, another thing is, sir, now we are discussing the Ukraine issues. There, the bleeding war field of Ukraine. Sir, the number of the anemic children in India is the more than the 2 times of Ukraine, entire population of Ukraine. So this also will be discussed here, sir. Sir, UNICEF report says that the major portion of the death of children under 5 is related to malnutrition. Every day in India, more than 4,500 children die. In a single minute, we are losing 3 children. Sir, in Global Hunger Index 2021, the position of India 101 out of 116 countries. Sir, Global Hunger Index has been prepared on the basis of the performance in undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. The report of National Family Health Service, NFHS 5, has shown the status of India. In these areas, in India, we will see these all cases. A huge urban-rural divide also we are seeing. The extreme divide between urban and rural areas is pointed in the report. Sir, in neonatal mortality rate, the child death
before the first 28 days of the birth. Urban is 18, rural is 28, average, national average is 25. Infant mortality rate, sir, urban is 27, rural is 38, average 35. Under 5 mortality rate, urban 32, rural 46, average is 41. Child stunting, urban is 30, rural is 35, national average is 41. So child wasting, urban 35, rural 37, average, national average is 35. Sir, 2 points, sir. Underweight is urban 27, rural 33, national average is 32. Sir, these all things I am quoting from the report of the government report. In this capital city, sir, Delhi, 3 girls aged between 2 and 11 starved to death, sir. Doctors in the hospital, after the postmortem report, they said, sir, they had not eaten a single piece of bread in the previous 7 days. In previous 7 days, sir, they couldn't take a single piece of bread. The majority of the workers in India are getting very meager amount as their wage. Sir, the minimum wage of employees in various parts, their minimum wage is below than the price of the 2-liter petrol, sir. And there is a huge decrease in the real wages of the workers. The existing wages to the workers is not sufficient for to buy even a liter cooking oil. So even a cooking oil, they are unable to buy with their wages, sir. Sir, the workers have their own dreams. They have dreams for better education. They have dreams for better food, for clothing, and these all things are, everybody have their own dreams, but they are unable to fulfill their dreams with this wage. The workers of the world unite is the word is in our hearts, sir. And Max, in his great work, you told you have nothing to lose. Also, we are keeping in mind. So, sir, I am repeatedly telling to you, एक बागी नहीं, मनोजा, एक बागी नहीं, एक गेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे. So, sir, dear sir, our constitution, preamble of the constitution says, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So, sir, these words I am concluding. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sivdasan. The next speaker is Dr. M. Thambudurai. Thank you, Mr. Chairman. The 4th Union Budget presented by the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, on 1st February 2022 was like a booster dose for the economy in the endemic, post-endemic era, wherein the government has chosen to lead the path by heavily increasing the capital expenditure to create a cycle of high growth, employment generation, spur in the consumption, which in turn is likely to bring buoyancy in revenues rather than going for the fiscal squeeze, which is required to take India to the next level. Sir, I want to make one thing very clear. Some of our opposition members accused the Prime Minister has not taken keen on the poor and others. There is no development like that. I want to say, sir, the budget seeks to lay the foundation for achieving the vision of the Prime Minister of India, Narendra Modi ji. For example, if you take agriculture, agriculture is giving more importance during Modi's period. He allocated a lot of money, and also the agriculture workers, the rural area, is getting a lot of incentives, and they have given the money for them, putting in their accounts to give purchasing power and the employment opportunity. And also, you know very well, when we are facing this pandemic situation, how our Prime Minister acted to see that to boost get the more vaccinations for that, for encourage our Indian manufacturers to do that,
laboratories. He visited physically. Taking the risk of his life, he visited most of the labs and to see whether it's going on or for the country. That way, he is such kind of a man. He has taken so much stress for the poor people and for development of this country, and also the actions which produced also exported to other countries also. That way, he is concerned for other states, other countries also. That way, he showed his human kindness. We have to appreciate that, sir. Regarding the last time also in the question number you have seen, in the employment, our Honorable Minister is Labor and Employment Minister is there. I raised a question. At that time he answered, how these recent years, the employment ratio increased year by year. That showed that employment opportunity, how is our Prime Minister giving to the youth, is especially for education, health, and other sectors is showing. Especially, sir, if you take schemes-wise, if you take also drinking water scheme, he has allotted a lot of for that. Then also for housing scheme, Prime Minister allotted a lot of fund for that. For roads, historical allocation given for the road development. And also education also same way. Defense, he is more concerned about the security of this country. That is why when Prime Minister has taken over these reins of this country, he is concentrating more on the defense sector to see that the external threat must not be there, especially from Pakistan or China and other countries. That shows this capacity, how that when he is investing more, employment giving is also getting there. And also, especially MSME sector. MSME sector is given more than 9% of that thing has been increased to give them a lot of employment opportunity. Sir, I want to say some things regarding the Tamil Nadu also. Sir, Edapadi Palaniswamy, as a Chief Minister at that time, he lot of welfare schemes for socio-economic schemes. He implemented that based on our Amma, Madam, who has done Jayalalitha ji at that time, same way he has done what MGR also did. But our Elango said, this government is not caring about the poor people. Repeatedly go on arguing, this government is not bothering about the poor people. There is no socio-economic development interest. Sir, I want to put one question to the honorable members. When they present the budget in Tamil Nadu, what's up the budget that Tamil Nadu is implement? They never included what the promises the main election phase was to. For example, you have 1,000 rupees will give every family members. Whether implemented or not. No, I'm telling, because when you are, sir, and also, for example, 2,500 rupees, our Edapadi Palaniswamy is given the every household car holders in the pending situation. Not only pending, Pongal gift also is given. But that has been withdrawn. Sir, Mangal Sutra is a big, good scheme for poor people giving gold to the Tali Tangam. Madam Jayalalitha has brought. It is his time. But that is, it's not your time, it's his time. Let him speak. Because when you said, sir, when you said that there is no, this government is not caring about the poor, whether that government is caring about the poor, I want to ask them. Tali Tangam, there is a good scheme for the educated people, poor people. Madam is into the scheme. That scheme implemented very well by Edapadi Palaniswamy. But now this government has stopped. Then how can if they come and discuss and criticize this government when Modi is giving a lot of welfare programs? So many, Madam Sitaram from Tamil Nadu, she has coming giving a good budget when everybody is appreciating. Why has to go on telling there is socio-economic neglected? This same word that DMK has gone telling. Which they neglected this kind of programs. That is why what we are seeing that, sir. This is another thing, sir, regarding education. Sir, our country needs 5 sectors we have to concentrate. One is agriculture. Second is education. Third is health. Fourth is defense. And other industrial activities. We appreciate that, sir. But what I'm suggesting, sir, education side, health side, we require giving a lot of importance, which our government is ready to, is coming forward. But I request Financial Minister
One problem is facing self-financing institution, trust, what our trust recently said, our Andhra friend has said just now, Reddy has said, Trust Act, when the Congress was in power, they brought an act making all 85% of the trust money be spent same here. They cannot save it. Otherwise, income tax won't accept. But now, sir, pandemic situation has come. Most two-thirds of the institutions in India run by the trusts. When trust is not having money, they are not saving. How they give the salary to the people? Therefore, that class is affecting. That is trust. Therefore, if a government somebody says, don't pay the tax, the country means, can the government be able to run the government? Therefore, same way, if your trust cannot have the money, the parents, how they give the salary to the workers or teachers, or so many institutions are suffering that. Therefore, I am requesting the Honorable Finance Minister look into this, how the Trust Act is not a correct one. It's going to affect so many employed people, many teachers and other workers. The country, they're suffering a lot because of that. Government is not in a position to finance for the institutions. Bank is not going to give loan that. How they going to run that? Therefore, that's the lacuna which created by the Congress government, that has to rectify this present government, seeing this situation, sir. This I am requesting. Same way, income tax. Income tax department, madam has given certain concession last time. Appreciate that. At the same time, previous government, nothing done. I know that. But now, once again requesting Honorable Finance Minister to see sympathetic with the salary class people. When price index is gone increasing, your slab is still you are maintaining that. Therefore, they are not in a position to pay that. Therefore, I humbly request Honorable Finance Minister to look into salary people problem, how you can further give concession. That is my humble request. I welcome this budget. It's a fine budget. It's a sympathetic, socio-economic based on that. And also, Narendra Modi ji is very concerned about the poor people, and he has brought so many schemes, well-known schemes. I once again appreciate this government, sir. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Sukhendu Sagarrai. While participating in this appropriation and finance bill, the first thing that occurs to my mind is that this government has given a return gift to the nation after the elections in the 5 states recently held. First of all, the petrol and diesel prices have risen 6 times in 7 days. LPG cylinders costlier by 50 rupees, and it is almost rupees 1,000 per cylinder. Prices of kerosene oil have doubled. Edible oil prices are up by 25 to 40%. 11% hike in prices of essential medicines, and it will be further rise in the coming months, according to reports. So, rise in prices of cereal, fruits, vegetables is driving up the food inflation. Petrol prices for bulk users has been increased by rupees 25 per litre, and jet fuel prices have also increased by 18%. Everybody knows in this country that when the price of bulk users for particularly diesel is increased, there will be cascading effect on all the essential commodities because of the transportation of the goods from one station to another. Sir, Moody's Investors Services has estimated that fuel retailers together lost around rupees 19,000 crores in revenue for keeping petrol and diesel prices on hold during elections in 5 states, because the government did not want to rationalize the price during election because of the political reasons. And after 5-6 months, it has been doubled, tripled, and going up every day. So my submission to the government would be that it needs to be ensured that these losses are not entirely transferred to the common people. So far the finance bill is concerned, it was passed in Lok Sabha after accepting 39 amendments.
to the bill that was tabled? Why was there so many amendments? Was it because of word drafting? Was it because of careless proofreading? Or failure to complete stakeholder consultations and feedback gathering ahead of introducing bills in Parliament? Because everything done in a hush-hush manner, and all on a sudden it is tabled in the Parliament, either in this House or on this House. So far, Finance Bill is concerned, it was tabled naturally in the other House. So government is emptying out the piggy banks, the borrowings from small savings. The borrowings from small savings are designed to support household and pensioners, not to finance the government's deficit. In 2021, the government budgeted to borrow 2.4 lakh crore from small savings, but ended up borrowing more than double of this figure. For 22-23, the government has budgeted for 5.6 lakh crore, a figure bound to increase and is lower than last year revised estimates. Sir, poor allocation for marginalized groups. This year's budget has allocated rupees 70 crore for the rehabilitation of those involved in the manual scavenging under the self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. This is 30% less than the last year's allocation of rupees 100 crores. Shockingly, even this 100 crore was revised down to rupees 43.31 crores. Why is not the government able to utilize the allocations made towards manual scavenging? Is there no seriousness in ensuring that people are not forced to risk their lives and dignity like this? Instead, the government tells us in this House that no workers have died due to manual scavenging. It's a shame on the part of the governmental authorities. Sir, the central government has SREAS, an umbrella program comprising 4 highly important higher education programs, namely National Fellowship for SC, National Overseas Scholarships for SCs, top-class education for SC students, and free coaching for SC and OBC students. But this House will be shocked to know it saw a combined allocation of only rupees 364 crore. Sir, so far the women and children are concerned. The general budget has decreased from 0.71% of the GDP of the revised estimates for 21-22 to 0.66 in the estimates of 22-23, according to an analysis of the All India Democratic Women's Association. I don't know how far it is true, but government will be in a position to tell this House that what is the truth all about. Sir, at rupees 92,736 crore, the children budget has also dropped from 2.46% of the expenditure this fiscal to 2.35% in the next fiscal. Between April to December 21, only 48% of the approved budgets for midday meals had been released. For ICDS, it was 52%. The allocations for midday meals are 11% lower than the budget estimates for the previous year. Sir, so far the education is concerned, the budget allocation made last year for education saw a 6% decrease from the budget allocation made in 2021. This year, the allocation saw an increase of 12% as compared to last year, but only a 5% increase over the allocation of 2021. The entire allocation on education for the previous year has not been used, in spite of the economic survey finding an increase in the number of children not enrolled in schools after the pandemic. So ironically, the total expenditure in education is less than 1% of the GDP, whereas the cash-strapped states, they are contributing 3 to 4 times than the center. So the states are more effective than the central government in providing funds for expenditure in the education heads, on the education heads. Sir, my next point would be, the government has claimed the the government has made tall claims about resource mobilization.
But according to me, the main target of this government for resource mobilization is only to sell out the public